Hello viewers, the question is two moving coil meters M1 and M2 have the following particulars. R1 is equal to 10 ohms, N1 is equal to 30, A1 is equal to 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square, B1 is equal to 0.25 Tesla, R2 is equal to 14 ohms, N2 is equal to 42, A2 is equal to 1.8 into 10 to the power minus 3 meter square, B2 is equal to 0.5 Tesla. The spring constants are identical for the 2 meters. Determine the ratio of part A current sensitivity and part B voltage sensitivity of M2 and M1. So in this particular problem we have to find out the ratio of the current sensitivity as well as the voltage sensitivity. So first of all, the formula for the current sensitivity is given by Is is equal to NBA upon K, where Is is the current sensitivity, N is the number of turns, B is the magnetic field, A is the area of the coils, K is the spring constant. And the voltage sensitivity Vs is given by the deflection per voltage, which is NBA upon Kr. So these are the two formula. Current sensitivity, it is deflection per unit current, and voltage sensitivity, which is deflection per unit voltage. Current sensitivity is NBA upon K and voltage sensitivity is NBA upon Kr, where R is the resistance. So in the first part, we have to find out the ratio Is2 upon Is1. So Is2 is given by N2, B2, A2 upon K2, and Is1 is N1, B1, A1 upon K1. As given in the problem, the spring constants are identical. It means that K1 and K2 are same. So they cancel out. So we can say that the ratio of the current sensitivity is N2, B2, A2 upon N1, B1, A1. Now putting the respective values here, we get N2 is given as 42, B2 is given as 0.5 Tesla, A2, which is the cross section area, is given as 1.8 into 10 to the power minus 3 meter square upon N1 is 30, B1 is 0.25, and A1 is 3.6 into 10 raised to the power minus 3. Now 6 5 ja 30 and 6 7 ja 42, 0.5 and 0.25, here comes 2, 1.8, 3.6, this is 2 here, and then there is a bit correction here. Here we get 2 and here we get 1, and this 10 to the power minus 3 cancels with this 10 to the power minus 3. This 2 cancels with this 2. So in this way we get this ratio as 7 is to 5, or we can say that 1.4 is to 1. So this is the ratio of the current sensitivity. Now voltage sensitivity ratio we can calculate easily because we now know the current sensitivity. If you see the relationships, these two relationships of current as well as the voltage sensitivity, then you can easily see that the voltage sensitivity is current sensitivity divided by R. So we can say that Vs2 upon Vs2 upon Vs1 is equal to Is2 upon R2 upon Is1 upon R1, or we can write it as Is2 upon Is1 multiplied by R1 upon R2. Now we have calculated this ratio Is2 upon Is1 earlier, which is 7 upon 5. So 7 upon 5 multiplied by the value of R1 is 10 and the value of R2 is 14. So after solving this, we get the ratio as 1 is to 1. So the voltage sensitivity ratio is 1 is to 1. So these are the answers. The first answer, which is the ratio of current sensitivity, is 1.4 is to 1, and the second answer, which is the voltage sensitivity ratio, Vs2 upon Vs1 is equal to 1 is to 1. तो यह प्रॉब्लम पूछी गई, इसमें दो मूविंग कॉइल्स की बात की गई है, उनके पैरामीटर्स गिवन हैं, कुछ उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एरिया गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. दोनों ही कॉइल्स के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, आइडेंटिकल है दोनों मीटर्स के लिए. हमें रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का.
तो करंट सेंसिटिविटी जो कि होती है फाई अपॉन आई, विच इज़ फाई अपॉन आई, ये बराबर होती है एन बी ए अपॉन के। और वोल्टेज सेंसिटिविटी जो कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये बराबर होती है द एन बी ए अपॉन के आर, इस वैल्यू के। या हम कह सकते हैं आई एस अपॉन आर, करंट सेंसिटिविटी अपॉन द रेजिस्टेंस। पहले पार्ट में हमें करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा एन टू बी टू ए टू अपॉन के टू डिवाइडेड बाई एन वन बी वन ए वन अपॉन के वन। या के वन से के टू कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के ही स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो सेम है। अब हम रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करेंगे एन वन एन टू बी वन बी टू और ए वन ए टू की। तो यहाँ पे फाइनली हमें जो रेशियो मिलता है 7:5 मिलता है, या हम कहें 1.4:1 रेशियो मिलता है करंट सेंसिटिविटी रेशियो का। फिर उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, यानी कि वी एस टू अपॉन वी एस वन निकालना है। तो ये बराबर होगा आई एस टू अपॉन आर टू डिवाइड बाई आई एस वन अपॉन आर वन। या हम कह सकते हैं आई एस टू अपॉन आई एस वन मल्टीप्लाइड बाई आर वन अपॉन आर टू। तो यहाँ से हमने आई एस टू अपॉन आई एस वन जो कि हमने पहले पार्ट में कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू हमें पुट कर देंगे 7:5, 7/5। आर वन की वैल्यू हमें गिवन है, आर वन इज गिवन एज 10 ohms एंड R2 इज गिवन एज 14 ohms। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 1:1 का रेशियो। सो दिस इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।